Akhnur sub-division area. You could see that Jammu Kashmir police personnel, they are giving, after giving training, they are providing these SLR weapon to the village defense guard, those who are continuously, engaged with the village defense committees in the past as well. You can see that these are the weapons which has been provided to the village defense guard. These are the self-loaded rifles which will be, now helping these guards to protect their people, protect their village. In the Jammu and Kashmir, we have seen that in the recent past how terror-related activities have increased. So Jammu and Kashmir has to go for the election as well. So that's why these decisions are very important. And you can see that more than 200 weapons are given to the village defense guard today only. And this process will go on further in the coming areas, in the coming times, in the different areas which are terror infested, because we have seen that more than 8 districts of the Jammu region that are terror infested nowadays, and terrorists also have infiltrated to this side. They are giving trouble, and it can be a threat to the civilians' lives as well, because in the Dhangri area of Rajouri, it has been observed that terrorists, they entered the houses of the civilians and then they attacked, they attacked the people over there, in which 7 people were killed. Let's speak to some of the villages, those who are getting these weapons, that what they have to say. आपको भी ये हथियार मिला? हाँ जी, मिला जी। क्या लगता है कितना फायदेमंद है ये? बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा काम करेगा जी। पहले आपके पास कौन सा हथियार था आपको? वो दूंगा था ना जी, 303 था, उससे अच्छा है, अच्छा काम करेगा ये। We have some other people as well. आपको भी ये हथियार मिला है, तो कितना इसका फायदा रहेगा? पहले कौन सा हथियार था आपके पास? सर पहले हमारे पास 303 था, उसमें से लोड करने पे एक ही फायर होता था। ये अभी हमारे पास ऑटोमेटिक हथियार आ गए हैं, अभी हमें किसी चीज की चिंता नहीं, डट के मुकाबला करेंगे। तो अगर आपके गांव पे लोगों पे खतरा होता है तो कितने तैयार हैं आप? इसकी ट्रेनिंग भी दी गई है आप? बिल्कुल सर, ट्रेनिंग भी दी गई है। सुजमा में ट्रेनिंग की, वहाँ हमारे पास आर्मी वाले हैं, उन्होंने अभी पिछले महीने हमें वहाँ ट्रेन किया और इंसास की फायरिंग कराई थी, वहाँ SLR की करवाई है, तो चलता रहता है। So you can see that this is the weapon. आप एक बार कॉक करके बताएंगे कैसे इसे करते हैं? देखिए, so this weapon is basically self-loaded rifle, and when somebody having this weapon, they can load it and then can fire on the enemy or the target for 20 continuous fire can one can open. So that indicates that how they have been strengthened by the forces over here in the Jammu and Kashmir, and definitely it is going to help to guard their areas as well. आपको भी ये weapon मिला है, क्या कहेंगे? जो गृह मंत्री ने फैसला लिया, इससे आपको कितनी ताकत मिलेगी? सर हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं गृह मंत्री का और अपने पुलिस डिपार्टमेंट का, जो भी ऑफिसर हमारे ऊपर बैठे हुए हैं उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि पहले हमारे पास 303 था जिसमें सिंगल फायर होता था, तो अब हमें ये ऑटोमेटिक वेपन दिया गया है, इसके लिए हम तहे दिल के धन्यवाद करते हैं। तैयार कितने हैं मुकाबला करने के लिए? सर हम 24 घंटे तैयार रहते हैं। इससे पहले 303 से भी हम 24 घंटे ड्यूटी देते रहते थे, अपने गांव में, अपने पहाड़ी एरिया में और नेशनल हाईवे रोड पे पूरी निगरानी करते हैं, और तो इससे हम और ज्यादा हमारा जो मनोबल है वो बढ़ेगा, हम दिन रात ड्यूटी देंगे सर। So these are the words from the people, those who are getting this weapon, and these SLR self-loaded rifles basically is going to help the villagers to defend themselves and definitely to guard their areas in the village. And earlier what was happening, you can see that these are the SLR weapon, and today more than 200 weapons will be provided to the village defense guard. Let's speak to the people, those who are basically in the queue and waiting to replace this old traditional weapon. This is basically a 303 weapon, which basically was provided many years back to village defense guard, and even with this weapon they have shown the terrorists and enemy that how they can protect, and they are ready to guard their people over here in the villages. ये बताइए, जब ये आपके पास हथियार था, ये वाला हथियार, इसमें क्या करना पड़ता था, कैसे करते थे? क्या करना पड़ता है, क्योंकि जो इसको बार बार काक बनना, ये वाला और ये बार बार काक बनना पड़ता था। अभी वो मिल रहा है, वो नया हथियार है, ऑटोमेटिक है,
उसमें ब्रेस्ट भी चल सकते हैं और सिंगल गोली भी फायर हो सकती है। उससे हमें बहुत लाभ होगा, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में इससे बार बार कार करने से मिलिटेंट से मुकाबला नहीं कर सकते थे हम। अब नए हथियार आने से हमें बहुत फायदा होगा, हम अपने क्षेत्र की अच्छी तरह से रक्षा कर सकेंगे। So clearly, clear words, and people, those who are basically here, they are saying that definitely it is going to help these villagers and the people to guard their area and to to make the people feel safe, because in the recent time we have seen that in Rajouri as well, one village defense guard was rewarded with a Shaurya Chakra after he has killed one terrorist, and that's why he was rewarded. So these kind of weapons have been provided to these villagers, which basically will help them to guard their areas. अच्छा लग रहा है सर? बहुत बढ़िया है। ये ठंडों में जब इन लोगों को वेपन मिले थे, हमारे लोगों को, ये कहते हैं कि दिलेरी का काम, तब आपको पता मिलिटेंसी का दौर बड़ा जबरदस्त था, तब इन लोगों ने, उस परिवार लोगों ने मतलब हथियार उठाए थे। वेपन बहुत बढ़िया था वो भी, बीच में लेकिन खराब था। बीच में जब हमारा एक बीडीसी मेंबर बसंतगढ़ डुडू में मारा गया, उसके बाद गृह मंत्री जी ने बहुत बड़ा डिसीजन लिया है, तो इनको शांत करने की, मतलब हथियार देने की जो भी प्रक्रिया शुरू की है, हमें अच्छा लग रहा है। So they are saying basically it's a very well initiative which they have started, because by with the help of this weapon they'll be able to fight the terrorism and terrorists very effectively. We know that Jammu and Kashmir has to go for the assembly election in the coming day, and there is a threat that terrorists could, those who have infiltrated to this side, and number could be more than 70 to 80. So they could be a threat to the civilians' life in the village as well, and that's why these villagers have been strengthened by the government of India by providing them these automatic weapon, and definitely it is going to thwart Pakistan's nefarious plan of disturbing peace. With Banditi Raj, India News.